Hi, this is Shubhayan Chakravarti, and I am delighted to welcome to our domestic Adda. Joydeep Mukherjee has been commentating in domestic cricket for years now, and it is a pleasure to add that extra layer to our domestic coverage. Of course, Kaushik Kashyap is with us as well. Joydeep, thank you for doing this. Thank you for joining our domestic Adda coverage, and I'm pretty sure you will bring that extra depth which we are seeking now. No, I love domestic cricket and I know how good you boys are with your data, with your analysis. So, today the Indian team is what it is because of the domestic players. 100%. बिकॉज यही 100%. प्लेयर उनको रेडी करते हैं. आज विराट Right. कोहली को भी यही प्लेयर उनको रेडी किए हैं. विराट कोहली Right. अंडर 19 से आया, 3-4 साल डोमेस्टिक खेला, खेल के जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. तो वो जो गैप होता है जूनियर क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच में, उसके लिए तैयार करता है कौन? पीपल लाइक अशोक डिंडा, पीपल लाइक जयदेव उनादकर, Right. पीपल लाइक सितांशु कोटक, पीपल लाइक अमोल Right. मजुमदार. अभी शुभमन Right. गिल हैड टू प्ले अशोक डिंडा ऑन अ ग्रीन टॉप बिफोर ही प्लेड जिमी एंडरसन ऑन अ ग्रीन टॉप. I'm not saying Right. it's the Right. same, but थोड़ा जो पाथ है थोड़ा तैयार होता है because Ashok Dinda has got 400 first class wickets. So you just gets 100%. you ready, and people like Jaydev Unadkat and Ashok Dinda and these are the sort of people. Fast puzzle for that matter. Yeah, all of these guys. If you look at Yeah. Jalaj Saxena, these are the guys who get you ready. So their contribution to Indian cricket is not on the face of it. But Right. जो उधर stars है, अब रोहित शर्मा will tell you that I struggled on that pitch against Jalaj, or somebody Shubman Gill might say Dindada was bowling really well in Mohali when I played in Punjab Right. Bengal game, but because he Right. could conquer that got him into the next stage, which is play international cricket. तो मैं तो domestic cricket में 100%. बहुत बड़ा, and I know you guys are very passionate about domestic cricket also. इसीलिए जो है ना कौशिक भी अग्री करेगा. हम लोग T20 वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, बट फिर भी वी आर फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट बिकॉज वी वांट टू गिव देम द एक्सपोजर, गिव दोस प्लेयर्स द exposure, and we all know that honestly there are not many media houses who do that, who give them the proper coverage. Who is the youngsters, who are the youngsters playing in this match? Not many people know, and I'm pretty sure with our coverage we would like to achieve that. True. And in today's episode, today's episode, we will be discussing Syed Mushtaq Ali Trophy's Group D encounters, Group D teams, and which team to start other than Himachal Pradesh. I mean, the Vijay Hazare Trophy last season, and now the fairy tale continues this season. Joyla, you were there, you saw them led by Rishid Dhawan, a fantastic small compact unit who have been performing out of their skins. And मैं इस बात पे हिमाचल पे इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि उनके पहले दो मैचेस रेन अबैंडेड मैचेस थे. उसके बाद भी जाके दे टॉप द ग्रुप, दे वॉन एवरी मैचेस एंड फिनिश द ग्रुप एज एन अनबीटन साइड. इनके साथ ना मैं ऋषि धवन के साथ टॉस में था एक दिन, तो मैं इनको पूछा कि व्हाट मेक्स हिमाचल सो गुड. उन्होंने कहा कि हम सब 35-40 मैच मिनिमम खेल चुके हैं, हमारे पास 10-12 मैच वाला कोई प्लेयर है नहीं. सो हम अकेला खेल रहे हैं. हम 20-25 लड़की हैं जो तीनों वर्जन खेलते हैं. We don't have 40 players, we have about 20-23 players. So everybody knows their role, everybody does their thing, and if anybody who sees them play knows they're a well-oiled unit. Now I was also commentating, and I was at the end when they beat a very strong Tamil Nadu team in Jaipur on that winter day. Absolutely. And Dinesh Karthik had got a brilliant 100, and the way Himachal came and chased, they were up against it because Tamil Nadu and Karnataka are two superb white ball sides in the country. To beat Tamil Nadu in a final for Himachal, वो ब्रिज क्रॉस करना, जो ब्रिज तक आया ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाया, but to be able to cross the bridge and ultimately get there. So now there is a belief. See, एक बड़ा ट्रॉफी जब आता है ना, हम लोग 1989 में रणजी ट्रॉफी जीता था, 90 में सेमीफाइनल, 91 में सेमीफाइनल, 92 में फिर फाइनल, 91 में सेमीफाइनल. वो बिलीफ आ गया था कि हम कर सकते हैं फिर. एंड वही प्लेयर लेके तो जो पार्क में जब घुसते हो, यही तो होता था जब फाइनल जीते, यही तो पॉइंट पे था, यही तो मिड विकेट में था, यही तो ओपन किया था, यही तो बीच में डाला था. सो यू फील दैट यार ये ट्रॉफी जिता के दिया है, ये फिर करेगा. राइट. So that confidence comes from there. So Himachal, that both games rained off, and they knew हम वो control करेंगे जो हम control कर सकते हैं. They have a very very important coach in Rajiv Raja, who used to be coach in Jharkhand all these years, very close to Dhoni, part of CSK
coaching Right. staff. He's gone there and he just added more to it. Already ready थे, Right. उसमें और भी Mhm. add. He's joined this Right. year, but I could see the impact of his the calmness, the coolness. Now I'll give you an example. ये जो Mhm. impact player ने Mhm. बाकी सब टीम थोड़ा टाइम लिया. एक मैच में Right. सुमित वर्मा आउट हुआ फर्स्ट बॉल और impact player निखिल गंगटा ने next in. So at one time on the ground we had Sumit Verma, the replace And player, Nikhil. and Nikhil Gante in the field, and he went Right. and got 50. उनको Right. पता था कि अगर इसमें से जो जल्दी आउट हो जाएगा रिप्लेस कर देंगे निखिल से. Right. So very very well oiled unit. And white red ball they have a little bit of work to do because red ball we'll come to that later. There's a long season. Mhm. Right. Red ball. Joe, the prerequisites of a red ball success is different. But Right. white ball they're a fantastic. एब्सोल्युटली. एंड वो जो अभी आपने बोला कि दे आर वेल ऑयल्ड यूनिट, और जिस हिसाब से उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है, ऋषि धवन को एक सेकंड लाइफलाइन मिला है अपने अपने करियर में. लाइक ही हैज बीन परफॉर्मिंग ऑल दीस इयर्स, बट उनको फिर इंडिया सर्किट में लाना, नेट्स में एज अ बॉलर लेके जाना, एज एन ऑलराउंडर. एटलीस्ट द गाय, द बीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, एटलीस्ट दे आर कीपिंग अ चेक ऑन हिम, क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक पांड्या का एक रिप्लेसमेंट चाहिए. ऋषि धवन being the experienced player, he has done well. Kaushik, coming to you, Mayank Dagar, Vaibhav Arora, Rishi Dhawan, these are the players we usually talk about when we mention Himachal Pradesh. Which player has impressed you this season? सी वैभव बरोड़ा हमेशा से ही मेरे आईज में रहे हैं कि ये कैसा परफॉर्म करते, बिकॉज ही हैज समथिंग दैट स्किल जो बहुत रेयर है आजकल, जो हम लोग भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर को इतना हम अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्किल, द स्विंग जो Right. मिलता है उनको विद द न्यू बॉल, एंड ही हैज सम डेंजरस टो क्रशिंग यॉर्कर्स. तो ये चीजें हमेशा से मेरे को एक्साइट करती है वैभव अरोड़ा की तरफ. इस सीजन भी मैंने 1 या 2 मैच मैंने देखा था हॉटस्टार में, वो यॉर्कर डाल रहे थे, ठीक है. सो ही इज वन गाय, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर फ्रॉम हिम फ्रॉम नॉकआउट्स. नाउ Right. अभी क्वालिफाई हो गए हैं. एंड मयंक डागर राहुल द्रविड़ के साथ टाइम स्पेंड किए बहुत, एंड he's someone now he's arriving. श्रेयस अय्यर, मयंक डागर, ये सब, शार्दुल ठाकुर, ये सब बहुत मतलब एक साथ टाइम बिताया है. शार्दुल ठाकुर और Right. अय्यर तो आगे बढ़ गए, मयंक डागर अभी धीरे धीरे फिर से ऊपर आ रहे हैं. मयंक डागर का पर इस सीजन काफी जबरदस्त रहा है. 4 मैचेस में 8 विकेट रहा है और 4.62 का इकोनॉमी. जोएदा, 4.62, I think it's fourth best or fifth best in the Syed Mushtaq Ali Trophy. So if a player who can bring that enforcement to a bowling attack, it becomes really formidable. क्या प्रॉब्लम एक ही है, हमारा अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल ना इन वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ा चेंज कर गया. इट्स नॉट अबाउट योर बॉलिंग एनीमोर, इट्स हाउ वेल यू बैट आल्सो. So if you look at all the gun IPL left arm spinners, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, then the next lot coming to Shahbaz Ahmed, Shahbaz, Mitchell Santner. So right now that classical जो खाली left arm spin डालेगा, Sai Kishore has been as good as Mayank for the past 5 years. He is the Right. only bowler in his career his economy is below 6 inside Mushtaq Ali. right? And that's a phenomenal record because I have been involved with Syed Mushtaq Ali for the past 10 years. It is a very, very tough tournament. उधर में एक लड़का करियर में less than 6 पावर प्ले में डालता है, बीच में डालता है, एंड में डालता है, लेफ्टी को डालता है, राइटी को डालता है. Finally he has got his reward in IPL now. ये 2 टीम ज्यादा हुआ है, इसीलिए ये फ्रिंज प्लेयर्स को मैदान में उतरने का, 11 में उतरने का मौका मिला है. नहीं तो ये वो 12 से 22 में ही रह जाते हैं जिसको मौका नहीं मिलता है. तो ये मैं कहने बोल रहा हूँ, सी मयंक इज वेरी वेरी गुड, इज वेरी गुड ऑन द फील्ड एज वेल, इज अ गन फील्डर. बट somehow there are two things. One is the test match classical spinner. Right. वो करना है, उसके लिए रणजी ट्रॉफी में 50 विकेट लेना पड़ेगा. और अगर इसमें तुमको करना है, फिर तुमको you have to start batting also, or you have to be an unplayable player like a Sunil Narine who can play even if he doesn't bat, even if he doesn't field. मैं केकेआर का हिस्सा था जब सुनील नारायण नहीं था, और मैं केकेआर का हिस्सा था जब सुनील नारायण आया, और हम जो 2 ट्रॉफी, he was the only reason. Because लगता था हम 18 ओवर, हम 20 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, दूसरा 16 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, 4 ओवर है नहीं उसके. और कभी-कभी क्या होता था, उनको पता था कि 15 और 17 सुनील डालेगा तो 14 में
इकबाल अब्दुल्ला को विकेट मिल गया, रजत पांड्या को, हाँ लक्ष्मीकांत शुक्ला को विकेट मिल गया, because instead of getting 12 of that over they're trying to get 22 because उनको पता है सूर्यनारायण का 6 से 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा. right. So that is why Mayank also has to develop his batting, and he is good with the bat. So he has to develop, he has to bat 5-6. He has to do जो शाबाश कर रहा है बंगाल के लिए. हाँ Then he will exactly. become a serious wide. You name me, you both are, you follow cricket so closely. You name me one left arm spinner who's playing in the team without batting. India team में बताओ एक left arm spinner खेल रहा है. Oof, very नहीं है hard ना? to recall. नहीं है. नहीं. वही. Because अभी left arm spinner का role अपना all-rounder वाला role हो गया. Last I recall प्रज्ञान ओझा थे, उसके बाद से everyone has been all rounder. 5 साल हो गया, 10 साल हो गया हाँ. प्रज्ञान ओझा खेला. Right, उसके बाद से all rounders. The format has changed. The format has changed हाँ. for left arm spin. The requirement पहले था ये, अब Right. ये. And Right. I think we're suffering in Test match cricket. I think in Test match cricket we still need that Pragyan Oja, that Murli Karthik, that classical left arm spinner come and bowl. Left arm. That's another topic altogether. But wide ball खेलने के लिए it's very difficult to play just as a left arm spinner because wickets are too good. अभी देखो, we saw what happened to Aksar in the India-Pakistan. Right. Right. And how good is he in India? How good is he? Easy. And Terrific. Unplayable. he's had one bad over. Right. तो अगर अभी अक्सर को आप खिला सकते if he doesn't bat, then how much longer does a tail become? Exactly. Already we've got Shami, we've got Bhuvi, and we've got Arshdeep, and now we get a left arm spinner who can't bat. So 7 number Very keeper tough. must bat. That's why the batting angle has to come. Mayank with the ball in the field is superb. So the only reason शाबाश उसके आगे है या जो भी उसका आगे है, it is because of the batting issue. अभी देश बोली में सौरभ है, सौरभ from UP is ahead because he gets 40 wickets every year in Ranji Trophy. So अगर इस And he can bat. अगर वाइड बॉल के लिए आप रेडी हो रहे हो तो आप बैटिंग पे ध्यान दो. आप अगर रेड बॉल के लिए रेडी हो रहे हो तो क्लासिकल लेफ्ट 30 विकेट 35 विकेट लो. शाहबाज ने किया था इस साल बंगाल फाइनल खेला, उससे 35 विकेट लिया, 500 रन बनाए. आप भी करो, आप भी आ जाओगे. परफॉर्मेंस ही आता है, ये शाहबाज परफॉर्मेंस ही आया है, नथिंग. शाहबाज का राइज हैज बीन एक्सीलेंट. कौशिक ने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, शाहबाज ने धागा खोल दिया है. लाइक he has become the इतने यंग एज में to become the backbone of that Bengal unit, जहाँ पे इतना डेप्थ, इतना एक्सपीरियंस है. it requires tremendous performances and वही किया है. and जोयदा, मूविंग फॉरवर्ड कौशिक, मूविंग फॉरवर्ड आकाश वशिष्ठ, मतलब जब मैं स्टैट्स स्क्रॉल कर रहा था, मैंने थोड़ी बहुत इनकी बैटिंग भी देखी है. काफी हाई स्ट्राइक रेट से बैट करते हैं. 167 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट है 4 मैचेस में. एंड अगेन an all-rounder, left arm option, left arm spin option looks good right now. What do you say, Kaushik? हाँ, वो जॉय सर अभी जो बोल रहे थे वही आई वाज थिंकिंग दैट लेफ्ट आर्म स्पिनर हु कैन बैट. सो आकाश वशिष्ठ इज दैट वन ऑप्शन इन हिमाचल स्क्वाड. वो भी रहे हैं, अभी हो गया है उनका भी खेलना, बहुत साल से खेल रहे हैं. एंड इवन इन रेड बॉल उन्होंने अच्छा किया है इस साल. तो उनका रोल और भी मतलब क्लियर रोल दिखा कि इतने नीचे खेले डाउन द ऑर्डर with almost 170 strike rate and number 7. yes almost 170 strike rate and he has been economical. जितना भी उन्होंने bowling किया है, ज्यादा bowling नहीं किया है, ज्यादा ऋषि धवन ने उनको यूज नहीं किया है. Joy sir will can speak about Akash, him more. Kaushik, you make a great point. Now for Akash Vashish to be successful, he needs Mayank Dagar's bowling and his batting. समझ रहे हो? अभी उसका बॉलिंग थोड़ा पीछे है, इसीलिए ऋषि का पास they were playing on 3 tracks over there. One was a red soil was turning last 2-3 days. उसमें भी उतना बॉल नहीं डाला because his bowling is not where Mayank's bowling is. So Mayank's batting needs to be near Vashish and Vashish's bowling needs to be near Mayank. दोनों का crisscross. Yeah, because on a turning track, can you imagine अगर अभी ऋषि धवन सोच रहे अगर ये आकाश वशिष्ठ मयंक जैसा डालता, even if Mayank has an off day, I can always bank on him. But when Mayank and Ashish were bowling together, you could make out the difference. So उसमें काम करने. It's very important to know what do I need to do to go to the next level. सब बोलते हैं improve करो, क्या करना है, specifics दो हमें.
Mhm. बोलो कि क्या करना है, which part of my batting, my bowling. So in Bengal, everywhere we give everybody specifics. This is your role. This is where you are. This Right. is where you need to be in 6 months. This is where you need to be in 1 year. Then in 2 years you're there. I'm talking about an under Right. 19 player. Mhm. For a senior player, you're telling him, we want you to be here in 3 months. We want to be here in 6 months. What does the team require of you? Right. But excellent point, अभी Vijay. आई गेस अभी आई गेस जॉयदन कौशिक आकाश वर्षित को थोड़ा सा डिफेंसिव ऑप्शन, एक ओवर यहाँ डलवा दिया, शायद एक और ओवर इधर डलवा दिया, तो इट हैज बीन लाइक दैट, ही हैज नॉट इमर्ज्ड एज अ फुल फ्लेजेड लेफ्ट आर्म स्पिनर फॉर देम. No, he His wasn't economy bowling under skills. the gun. He wasn't हाँ bowling under the gun. एक विकेट गिरा, करा दिया. थोड़ा जो हाँ बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट थोड़ा लो है, वो स्ट्राइक पे फट से 4 बॉल उसको करा दिया, सिंगल रोक लिया. फिर बीच हाँ में सडनली 130 फॉर 2 था, 141 फॉर 4 हो गया, एक ओवर करा दिया. माइंड डगन को लाता है जब 70 पे एक है इन 7 ओवर्स. देन वो विकेट लेके देता है. So there's a राइट different way they are used. So राइट sometimes the economy you have cannot be judged just on paper, because when have they bowled? Who have they bowled to? राइट राइट. Yeah. Great points, great points, great points. Great And point. Yeah. Himachal, obviously table toppers now. Moving to the other team, which has been very impressive in domestic circuit for the last few years, Saurashtra. And when we talk about Saurashtra, of course, we'll come to Jaydev Unadkat. It's inevitable that we talk about him. But Samarth Vyas, how good has he been, Joyda, this season? Brilliant. See, he's been brilliant for a while, but when you do it consistently, and ये जो playoffs आ रहे हैं ना, इनमें actually पता चलता है. Because Right. मैं एक बंगाल player का नाम नहीं ले रहा हूँ, but we were playing in Ranchi, and all the scouts were Mhm. there, and he had 3 teams. He had 3 Oh. IPL teams who were gunning for him. We came to Kolkata for the playoffs, Mhm. and after that tournament, nobody wanted him. Because कभी-कभी group stage में ना थोड़ा हल्के टीम मिलते हैं. There's a lack of a Right. better word, Nagaland was a halka team, Bihar was a halka Uh-huh. team. Even for that matter, Right. Andhra were bowling the halke. Right. But over here, when you come, there's no halka team. Here, Right. one knock can change your life. Here, Right. one knock can change. जो कुछ नहीं किया है, इधर आके एक 40 ball 70 किया. In fact, Raina was out of form. He had scored 24 runs in 4 innings before coming here. Hmm. Against us, he got 161 balls. Right. And that again got him going. India, ये वो सब कुछ. So ये जो अभी जो playoffs आ रहे हैं ना, ये बहुत important है ये players के लिए. बहुत important है. Because वो जो पहले हुआ है, नाम आया है पेपर में, नाम पे टिक लगेगा playoffs के बाद. Exactly. I mean, समर्थ व्यास ने 2 बैक टू बैक 97 मारे थे. वही 97 वो अगर एक और बार रिपीट कर देते हैं उसमें प्री क्वार्टर्स में या क्वार्टर्स में आगे जाके नॉकआउट्स में, देन आई थिंक हिज नेम विल इमर्ज सडनली कि एक प्लेयर है ऑप्शन में बढ़ा जा सकता है. 2 reasons. One is that there are no halke teams. 2 is that it's the knockouts. It's the Right. knockouts. You lose, you're gone. तो वो pressure Right. लेके खेलना पड़ता है. Right. But he's a very good player. Very good player and a bit of power hitting as well. 5 matches, 266 runs, 183 का strike rate. Kaushik, you have been talking about Samarth Vyas as well. तो कैसा लग रहा है, मतलब अभी IPL ट्रायल्स हो रहे हैं. जॉयदा ने जैसे पहले बोला, ओवर द इयर्स पूरे डोमेस्टिक सीजन में स्काउट्स रहते हैं, सारे टाइम देखते रहते हैं. समर्थ व्यास, आर यू looking forward to him in IPL auction and of course pre-quarters and the knockouts as well? हाँ, he has played a very big role कि अभी क्वालिफाई किए उन लोगों ने, क्वालिफिकेशन के Right. behind he has a big role. I fully agree to Joy sir whatever he said कि अभी knockouts में हल्के टीम नहीं मिलेंगे. That is the reason Right. someone like प्रेरक मनकड़ got, मतलब इतना लेट लगा उनको एक IPL कॉन्ट्रैक्ट अर्न करने के लिए, because someone like शाहरुख खान has played impact knocks in the finals of Sayyid Mushtaq Ali Trophy, and those games came in televisions as well. So Right. यही रीजन, एक एग्जांपल वी कैन टेक प्रेरक मनकड़. नाउ अगेन प्रेरक मनकड़ इतना परफॉर्म कर रहे हैं ऑल फॉर्मेट, बट दिस टाइम अगेन ग्रुप स्टेज में थोड़ा शांत रहे हैं. नाउ ही नीड्स टू, आई एम जस्ट टेकिंग अनदर एग्जांपल प्रेरक मनकड़ का. वही It's a very प्रेरक मनकड़ से I even It's a very good example because he's a game-changing player. No, जो इस ग्रुप Right. देखा है, बोला क्या गेम उसने चेंज किया है. लेकिन Right. this
जो बैटिंग करने आया एक मैच छोड़ के, it was always about getting going and he could not get going. Sheldon Jackson could not, but Mhm. Sheldon Jackson is an outstanding player. Now it Right. doesn't, they don't become bad because they haven't scored in 4 innings. Now Right. Sheldon comes, gets a 42 ball 82 here against, let's say, an attack like Bengal, an attack like Delhi, an attack like Mumbai. Hmm. Careers change, lives change. Absolutely. Joyce, I'll come to Sheldon Jackson and Prerak Mankad, both of them, because up in the order, Cheteshwar Pujara has been scoring runs for fun. I mean, he has up the ante, अच्छा strike rate से run बना रहे हैं, नीचे समर्थ व्यास उनको अच्छे से support दे रहे हैं नंबर 3 नंबर 4 पे. But Prerak Mankad, Sheldon Jackson, इतना hope Sheldon Jackson had waited for that IPL contract for so long. उसके बाद केकेआर में उनको अच्छे से बैकअप दिया, उनको बहुत प्रेज भी किया गया था उनके पावर हिटिंग से, but he just couldn't live up to that expectation. और अभी भी, I mean, it is very early in this tournament, but अब जब knockout start हो रहे हैं, you would want a Sheldon Jackson to or a Prerak Mankad to score heavy runs down the order, क्योंकि हमें पता है कि these are the big guns, match changers जैसे आपने बोला, but runs of 17-3, 15-0, 26 unbeaten, I think Sheldon Jackson का ceiling is much higher than this. And that is the reason why they finished second. I think if Prerak Mankad और Sheldon ने अच्छा सीजन जाता ना, तो वो एक नंबर भी फिनिश कर सकता. उनका रविंद्र जडेजा नहीं है, उनका साकारिया नहीं है टीम पे. फिर भी साकारिया नहीं, रविंद्र जडेजा तो खैर उनके लिए खेलता ही नहीं, तो छोड़ दो. But not to have Sakaria in that team is a huge loss. Right. He's a very important member in that team. Somebody who's playing IPL, Absolutely. you can imagine how important he is. But for Sheldon, it did not happen. एक आधा loose shot, एक आधा ये वो थोड़ा. But all I'm saying is, Prerak be saying, I think Sheldon, I've seen Sheldon being at the best of the top of the order. Now with Pujara coming in, everything is changed. Now Pujara is opening. So Sheldon is not opening anymore. So all the gun knock Sheldon has played in for Saurashtra has all been at the top of the order. But now, the role has changed. He's now 4. Now, if you ask anybody जो पूरा जिंदगी T20 में ओपन कर रहा है बीच में खेलने के लिए ना, बहुत डिफिकल्ट है. आप रोहित शर्मा को दे दो 4 नंबर पे, खेले थे बीच में. आप ईशान किशन के दे दो 4 नंबर पे. संजू सैमसन को देखो, उसको बिकॉज वो जो पावर प्ले का जो यूटिलाइजेशन, वो जो मोड पे खेलते हैं ना, suddenly to come everybody on top of the circle, single तो मिल रहा है, मारो एक रन, just to get used to that. Right. Because what happens is like Sheldon Jackson is a free stroking player, so he likes one chip over mid on 4, one flick 4, so I'm batting 8 of 2 balls, then a couple of dots, then 1-2. So when the power play opens up, they're set. But now they're going into bat, not set, and the power play is over. Right. Prerak Mankad is different. Prerak Mankad has always batted at the back. उसका लिए हुआ Yes. उसका लिए scenario थोड़ा change हुआ है, and he's getting used to that. So there are two different problems they have, but they're game-changing players. Right. ये ऐसे player हैं कि अकेला जिस दिन खेलेंगे मैच जिता देंगे टीम को. वही मतलब जब भी सौराष्ट्र खेलती है, we always talk about कि प्रेरक मंकड़ खेलेगा. कौशिक is a big fan प्रेरक मंकड़ का, and I think सबसे ज्यादा disappointed वही है इस सीजन उनसे, क्योंकि we always expect प्रेरक मंकड़ to score runs, Sheldon Jackson to score runs, but Saurashtra is also a very oiled unit like Himachal. They also don't have a lot of players. आप देखो तीनों टीम में ज्यादा चेंजेस नहीं है, 2-3 ही चेंज है. यही चिराग जानी रेड बॉल भी खेलता है, यही प्रेरक मंकड़ रेड बॉल ही खेलता है, यही धर्मेंद्र जडेजा रेड बॉल भी खेलता है. सो उनके जो 15-16 प्लेयर है वही तीनों वर्जन खेलते हैं. So that gives confidence, unity, playing together. They know we belong here. It's a question of performing. It's a very oiled unit also. And Jaydev Unadkar is fantastic as a captain because he leads from the front like Rishi. एक कप्तानी होता है कि कप्तानी, एक होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तानी. ये दोनों वो करते हैं. हार्ड टाइम्स में बॉल डालते हैं, टफ टाइम्स में आके विकेट निकाल के देते हैं और रन्स भी बनाते हैं नीचे. That's the why they have the respect of the players. You see, respect as a captain is because आपके नाम के पास कैप्टन लिखा है, और एक respect होता है अंदर में कि यार ये जब फटी हुई है उस टाइम पे डालता है. ये नहीं देखता है किसको दूं, ये बोलता है मैं जाऊंगा, ये 70 पे खेलना, 40 बॉल पे मैं जाऊंगा, ये आउट हो जाएगा तब तू बॉल डालना. That is where you that's leader. That's the leader. And Kaushik, Joyda, moving to a question from our Twitter friend Pratyush, he has asked, who is Tarang Goyal and why he is opening ahead of Sheldon Jackson? Who is who?
Taran Goyal from Saurashtra, the opener batsman Goel, who has yeah, been opening along with yeah, because Cheteshwar Pujara along with. yeah, because they want to prolong. See what happens when Pujara opens. उसका रोल है लंबा खेलने का. Hmm. अभी शेल्डन भी जाके थोड़ा टाइम लेगा अपने लिए. So they want somebody to go full throttle. उसके लिए गोयल को दे रहे हैं. Hmm. So if Goel gets through, and I think that especially with an impact player, it's a 100% role Right. because you almost feel like you can be an extra batter. So अभी मैं अपने ओपनर को बोलूंगा full पेल जाके लगा पहला बॉल आउट हो गया तो impact player चला जाएगा. So I am feeling Right. good batsman. I have not lost a batsman, Hmm. not a batsman shot anymore because I've replaced Right. him with a batsman. So that is the reason I think they went to take that extra chance, and Sheldon is too valuable player to give them that role. You don't want to Right. lose Sheldon. Right. You want to Sheldon to play 12-14 overs. Camera Sorry. issue. No issue. Yeah. Sorry. No So issue. you don't want Sheldon to, take. You don't want to sort of sacrifice him, for lack of a better word. You want to Right. give him his time. But batting at 4, I could make out that it's not easy to bat. Like Surya, his game is batted to bat at 4. He can do lap, he Right. can play with the field. Dinesh Karthik bat at 4. These guys can bat at 4. Hmm. Andre Russell can bat at 4 because he'll play with the field. You need the power. But if you see the top 3, Ishan Kishan, Sanju Samson, Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, they'll struggle going at 4. Zero batting in the 7th, in the 9th over with power play gone. उनका जो फ्लो आने में टाइम लगेगा. और T20 है T20 है फ्लो का गेम. राइट. और संजू सैमसन आपने अभी अच्छा मेंशन किया क्योंकि संजू सैमसन को भी 3-4 सीजन लग गए वो ओपनर से मिडिल ऑर्डर के रोल में थोड़ा सा अकस्टम होने में, तो इट्स अ वेरी टफ रोल. वो भी वनडेज में. वो भी वनडे. वनडेज में बहुत टाइम है. मैं T20 का बात कर रहा हूँ. वनडेज में T20 में तो T20 में ही प्रॉब्लम. राइट. Because एंड कौशिक सर, रेपुटेशन भी बन गया ना संजू सैमसन कि यार 150 स्ट्राइक खेलता है. सडनली आ गया, पहले बॉल खेला 1 रन, पहले बॉल नेक्स्ट बॉल खेला 2 रन, एक कट मारा स्वीपर पे 1 रन. ये तो चौका होता है. अभी तो 1 रन है, 3 बॉल में 3 है. मेरा तो 150 का स्ट्राइक रेट है. सो जब तक सेट हुआ ही इज फीलिंग द हीट कि यार इस टाइम पे तो मैं 25 में होता था 14 बॉल में, लेकिन मैं 14 बॉल में 15 पे हूँ. mentality psychologically it impacts you. Exactly. It impacts you. Kaushik, thoughts on Taran Goyal or shall we move towards Chirag Jani, because I wanted to talk about Chirag Jani as well, someone who can give you a few overs, can bat as well, looks a good prospect, especially in the red ball circuit. I think he's a better option. हाँ, वो गोहेल का सर ने जो बोला दैट रोल कि गो बर्जर्क फ्रॉम द बॉल 1, कि पहले बॉल से ही शेल्डन जैक्सन जैसे प्लेयर हाँ यूज्ड टू है, बट ही इज कमिंग डाउन. ओके ठीक है, एक नया प्लेयर को देते हैं एंड ही इज कमिंग विद अ रेपुटेशन इन अंडर 25 में. लास्ट सीजन जो हुआ अंडर 23 नहीं हुआ, अंडर 25 हुआ है. वहां पे एक इनिंग्स खेला था उन्होंने तमिलनाडु के अगेंस्ट, 94 बॉल 154. So that is a big innings that gives a statement कि वो कैसा उनका ability है. And पूरे टूर्नामेंट में 132 strike rate, very few people come very near. Another guy, Himachal, Shubham Arora, I guess, who he comes a bit. He's not playing. He hasn't played till now. I think he's in the squad of Himachal. But उनका भी strike rate, इनका भी strike rate 127 था. वो 50 over game, 127 strike rate is a very very big thing in a 50 over cricket. And he can keep wicket as well, if I'm not wrong. No, ये strike rate का साथ ना कौशिक कितना रन है ये भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. Because sometimes you'll find, I'm just telling you, somebody will find like somebody who bats at 9, he scored 37 runs in 5 innings at a strike rate of 180. But 37 runs in 5 innings doesn't do the job. Maybe he did the job because he came at the end and hit 2 chakkas. Pankaj Jaiswal, 170 strike rate. But you put him at number 4. वो एंड में आके 1-2 छक्का मार देगा, वो बॉल कम कंज्यूम करता है, मार देता है, लेकिन वो 40 बॉल खेलने का औकात नहीं है उसके पास. राइट. सो ये स्ट्राइक रेट्स है ना, इसके साथ रन्स, एवरेजेस, मैचेस में तो थोड़ा ताल्लुक लगाना पड़ेगा, फिर पिक्चर क्लियर होगा. हाँ मैं ऐड कर देता हूँ. 277 रन शुभम अरोरा का था, 277 रन एट एवरेज ऑफ 55. So that is impressive. Yeah, so this guy has got the numbers. Now he's waiting for his chance. So these are senior numbers you're talking about? This is men's under 25 state A,
लास्ट सीजन दिसंबर में तो जो हुआ था. हाँ, सो अभी वो क्या है, मेंस दिस इज 50 overs Yep. because they don't play T20. So now that's the reason why he's in the squad. Yes. Right. And जो टीम विजय हजारे जीता है, इसमें घुसना बहुत डिफिकल्ट है. ये सब तैयार प्लेयर है. Unless somebody is Right. injured or ill, and these boys are tough guys. These Himachal boys are tough guys. ये इनके निकल रहते हैं, मैच नहीं मिस करते हैं. इनको पता है कि आज शायद वो दिन है, थोड़ा भूखा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आज शायद वो दिन है, मेरा 4 में 17 4 विकेट, और जॉन राइट सर बोलेंगे ये लड़का मुझे चाहिए, ये मेरा दिन है आज. Right. तो आई विल Right. ओनली नॉट प्ले if I am ready. I can't even get up from bed. Right. That is the sort of toughness they have. अगर ये उठ जाएंगे Right. तो ये खेल, ये छोड़ने वाले नहीं है. Right. 100%. I mean, that's a great point. But Joyda, when we talk about Saurashtra, we have to talk about Jaydev Unatkar. Kaushik, you as well. I mean, रेड बॉल में तो उन्होंने लाइन लगा रखी है विकेटों का, जो स्टैट्स है उनका, इट्स वेरी इंप्रेसिव. बट अब वाइट बॉल में भी वो कमाल कर रहे हैं. अच्छा स्ट्राइक रेट से, इवन लास्ट सीजन उनका आईपीएल में डिसेंट था इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी रेट एंड विकेट. तो इम्प्रेस कर रहे हैं. Joyda, what do you think? Should he get a recall in the Indian team? बांग्लादेश टूर आ रहा है. आई थिंक अभी टाइम है कि उनका एक्सपीरियंस यूज करें, क्योंकि जब उन्होंने लास्ट टाइम डेब्यू किया था, ही वाज वेरी यंग, वेरी यंग. See, white ball, it's all about options. मेरा एक फूफा है, बोलता है, उसको पूछोगे कि ये खाओगे, वो बोले ऑप्शन क्या है. ऑलवेज. सो अगर मैं आपको पूछूंगा रसगुल्ला खाओगे, हाँ खाऊंगा. अगर प्रॉन्स है तो प्रॉन्स खाऊंगा, रसगुल्ला बाद में खाऊंगा. सो व्हाट इज इन स्टोर? सो आवर रेड बॉल bowling attack right now, I think Jaydev got 60 wickets the year they won the final. So he's phenomenal in red ball. Right. You know, even in the Dilip Trophy, he was the man of the tournament. Abhi jo hua. 100%. Yes. Yes. So and मैं उसमें कमेंट्री किया था. कोयम्बटूर में फ्लैट विकेट में वो विकेट निकाल रहा था. अच्छे बैट्समैन को विकेट निकाल रहा था. Right. So sometimes to just, you know, put a tag, ये रेड बॉल, ये वाइट बॉल. अभी शामी रेड बॉल था, क्या किया वाइट बॉल से? बॉल तो बॉल ही है, स्केल सेट तो चेंज नहीं होता है. So I think Jaydev should get in a look in somewhere, whether it's red ball, white ball. He has ticked all the boxes. Right. Today if we see एंड लेफ्ट आर्म पेसर, जब लेफ्ट आर्म पेसर इंडियन सीनियर टीम में नहीं है अभी हमारे पास, अगर हम रेड बॉल की, यही होता है. साकारिया तैयार हुआ जयदेव के लिए. जयदेव का ही प्रोडिजी है, जयदेव से सीखा है, जयदेव ही गुरु है, और वो इंडिया टीम में चला गया पहले. जयदेव कमबैक, बट कमबैक के ही प्रॉब्लम है. कमबैक करने में ज्यादा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम एंट्री से, बिकॉज़ पीपल से वी सीन हिम, वी नो हिम, बट फर्स्ट टाइम एंट्री पहले बार घुस जाता है. आई वुड ऑलवेज गो विद जयदेव उनादकर बिफोर साकारिया, बिकॉज़ I think he's more of a finished product. I feel he's better with the bat. I think he's got more control. And you know, sometimes एक word है cricket में maturity. Cricket maturity. Experience. वो खेलते पक जाते हो. Season campaigner. इनको पता है. एक मैच में प्रशांत चोपड़ा बैटिंग कर रहा था, मैं ऑन एयर था, अपना उसके साथ था अंकुश बेंस. Easy game, 102 chasing. अंकुश बेंस ने लिफ्ट मार के आउट हो गया. तो मैंने बोला ये प्रशांत चोपड़ा आउट नहीं होगा, ये 60 नॉट आउट रहेगा, बिकॉज उसको पता है ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जहां पर रन्स के प्रेशर है नहीं, बॉलिंग के प्रेशर है नहीं. राइट. तो ये वाला दिन में ही वाज 62 नॉट आउट. राइट. because the difference between Ankush Bains and Prashant Chopra was in the head. So that maturity is what I'm talking about. Right. And absolutely, I mean, maturity, experience. इसलिए मैंने तभी स्टार्टिंग में कहा कि जयदेव उनादकर, when he made his India debut, he was too young. I think he was too raw in my opinion. And the way, मतलब राजकोट में वो black track में विकेट निकालना, to bowl long spells, he's ready to come back into the Indian team. But जो डेब्यू किया था इंडिया के लिए, जो अभी है, completely two different people. Completely two different people. So he deserves a chance. Absolutely. And Joyda, Kaushik has mentioned his name before in our other shows. Group D से बिहार के अनुज राज, I mean अभी वो शायद IPL ट्रायल्स में भी जाएंगे किसी टीम के लिए. How is he looking as a prospect, Joyda? Yeah, look good.
I think he needs to add a few yards, get fitter. Mhm. See, sometimes these stats you have, like I'll give you an example. Imlavati Lemtur from Nagaland, his stats are really good. But Okay. Nagaland only got 102 runs in every game. Right. So if I come out to bat and have to chase 100 runs in 20 overs, why will I take Lemtur for 12? True. Sometimes True. these stats they give you a fair idea. Now, somebody's played 80 games, it'll even out. But somebody who's played a few games, you will also have Mhm. to see. There are a couple of players who say, "Sir, my strike rate is 160 in Syed Mustaq Ali." But when we Mhm. differentiate the new teams, if we take Nagaland, Sikkim, Meghalaya out, his strike rate is 121. His Mhm. average also drops because he's got 100 in 51 balls against Meghalaya, and that is engulfed in this stat. So stat में भी थोड़ा differentiate करना पड़ता है कभी-कभी. At what Especially pace when, around? especially when there are different levels of team playing in one group. अभी Right. ये जो stats आएंगे ना, playoff वाले stats आएंगे ना, इसमें नहीं करना पड़ेगा उतना. लेकिन बहुत कुछ अगर क्लियर हो जाए. हाँ वही. So coming back to the point, I think he's very good हाँ. seamer. उसके पास slowers बहुत है, very good slower balls, तैयार bowler है, लेकिन pace पे काम करना पड़ेगा. Because आप एक इंडियन फास्ट बॉलर बोलो जिसके पास पेस नहीं है और वो 5 साल से खेल रहा है, 10 साल से खेल रहा है, कोई भी नहीं. नहीं. You need pace in international cricket. Unless and until you are as skillful as Bhuvneshwar Kumar, I mean that's a No, very rare Bhuvanesh case. Kumar is 135. By pace, I mean But 135. Pace, He was yeah. at bowling around he's he bowling was at bowling around I was 125, 124. He was okay. bowling Okay. 125. I'm talking pace means 135 plus. I'm saying हाँ. because हाँ. होगा one disadvantage of white ball cricket is it's generally played on cement wickets. You saw the हाँ. India Pakistan. सुबह Right. मॉइस्चर Right. था, सीट क्या अलग है, पर उसके बाद जो विकेट बन गया, तो उसमें अगर आपके पास पेस वाला बॉल भी नहीं है, स्लोअर चाहिए. स्लोअर तभी मायने रखता है जब पेस वाला बॉल है आपके पास. Right. So what does a Harshal Patel do? At his best, he does 137, then he'll bowl 117. But हाँ. if you don't have 137, then 117 is no good. So you need that pace ball also, and then you need the variety also. But he's a very good prospect. I think he knows how to bowl. You know, one thing what we saw is he was always up against it, except Nagaland. All the teams were better, but वो दम था डालने में, दम से डाल रहा था. क्या मैं रोक दूंगा इसको, वो था उसमें. और वो बहुत अहम चीज होती है कि बिलीव कि मैं जो भी आ रहा है, ऋषि धवन को रोक दूंगा, मैं शेल्डन जैक्सन को रोक दूंगा, मैं जो भी आ रहा है सामने, मैं प्रियांक पंचल को बॉल डालूंगा, आई कैन होल्ड माय ओन, नो प्रॉब्लम. ये दम उसमें है. Very good bowler. Very good bowler. Moving to our last segment, Kaushik, you have some updates on IPL trials. गिरिनाथ रेड्डी आंध्र प्रदेश का शायद अभी राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में जाने वाले हैं. शेख रशीद जो अंडर-19 क्रिकेट में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी दिखे थे, वो शायद मुंबई इंडियंस के ट्रायल्स में जाने हैं. हाउ डू यू रेट दोस टू गाइस? शेख रेड्डी टोटली डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे. व्हाट वी हैव सॉ हिम इन अंडर 19 लेवल, वो ओपन या फिर नंबर 3 पे खेलते थे, लेकिन यहाँ पे ही वाज गिवन a role of something like number 6, number 7, number 7 तो नहीं, number 5 और number 6 में. हाँ, number 6 में देखा था मैंने, and also came in as impact player. So वो उनका रोल completely different था. And as Joyda said, John Wright वहाँ पे present थे. Maybe he has seen something and मुंबई इंडियंस शायद जो हमको सुनने में आ रहा है कि मुंबई इंडियंस में जा रहा है. एंड गिरिनाथ रेड्डी राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज दे नीड अ फिनिशर, बिकॉज संगकारा मेंशन्ड दैट रियान पराग माइट बैट अप द ऑर्डर नेक्स्ट सीजन in the after I think in the press conference after the final last season. So they need someone in the finisher line. So Ginnath Reddy is one name. He hasn't got much opportunity or hasn't played that much well in this Saeed Mushtaq Ali, but he's one who can talk the ball hard. Even Karan Shinde is going for Mumbai Indians trials, right? Yes. Karan Shinde also, मैंने सुना कि he's also going for, he had couple of good knocks. Superb knocks. Yes. And he's a left-hander.
left-hander either. See, So that is a big sometimes what bonus. also happens is these trials, they put you in different situations. I have been a part of many a trial, so I know they put you in situations, and they see how you can handle the pressure. Then they see your range. अच्छा आपने ऐसे किया है. But if you look at the last 5 years, can you name me 3 players, domestic players, who have gone into IPL and held their own with the bat? I'll give you guys a week. I'll give you guys a week's time. Next show is 1 week later. Name me one person who bats at 4, 5, 6, 7 as an Indian batter, a non-India player, domestic player, Yes. who has gone and done his bit with the bat. We can mention, I guess, Jitesh Sharma. I can mention now. Who? We can. Jitesh Sharma. Jitesh Sharma. Vidarbha. But he's not a big name in IPL yet. Okay. No, yes, exactly. I'm talking about a guy who Has established himself in the team. Yeah. Surya doesn't play regularly. Jitesh doesn't play regularly. Even somebody like a Shah Rukh Khan doesn't play regularly. No. And I have seen Shah Rukh Khan play some knocks you can't even imagine. Yes. Once it was Bengal versus, I'll just finish off with this. Bengal versus Tamil Nadu, Vijay Hazare in Jaipur. The wicket was wet. We won the toss to put them in. In 38 overs, they were 134. In the last 12 overs, they got 175 runs. And our bowlers were Ashok Dinda, Mukesh Kumar, Shahbaz. Shahbaz got 100 in that game. His first 100. We became 20 for 5 and he got 100 while chasing. Come to that later. Yeah. But that Dinesh Karthik and Shah Rukh Khan just waited for the spinners, and Shahbaz bowled, I think, 10 overs for some 22 or something because it was wet. Once his spell finished, Ritik Chatterjee's spell finished, and the fast bowlers came back. I've never seen hitting like this in domestic cricket. I was there when he hit. I was on air when he hit. That Karnataka fast bowler over square leg at the Arun Jaitley Stadium to win Tamil Nadu the Mushtaq Ali last year. Right. Even somebody like him is finding it difficult to do 60% of that in IPL. That's how tough IPL is. Right. And I think Sheldon Jackson's example is great. KKR gave him that option of middle order finisher, and he just couldn't live up to the reputation, pressure, and everything. Getting a chance after so many years. एक तो आपको लल्लू बोला मिलेंगे नहीं. One. Two is आपको spinners भी मिलेंगे. Spinners we play really well. Spinners आएंगे तो we can get after them. But इनके spinner आते थे back in the day. Shane Warne, Muttiah Muralidharan, Sunil Narayan. ये spinner आएंगे. Right. Ravindra Jadeja, Akshar Patel, Ravichandran Ashwin. Those run of the mill spinners won't come. जिसको आप 12-12 लेते तो वो आएंगे नहीं. Right. And fast bowlers भी आएंगे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं. Exactly. And of course the international players. Then there'll be a Shahbaz in the middle who knows how to bowl in these wickets. Who knows अपना कैसे. So no freebies is what I'm trying to say. Otherwise Mushtaq Ali इतना साल IPL 12 साल हो गया. आप 3 प्लेयर का नाम बताना जिसने लगातार 3 साल IPL में 11 में अपना नाम बनाया है. रियान पराग बनाया है, but रियान पराग is also not a success in the IPL. Yes. Right. वो बैटिंग बहुत अच्छा मिल गया, बहुत रेयर बैटिंग. हाँ, वो that is good for him. I'm happy for him. But I'm saying somebody with just this performance has been there in the 11. The reason is it's such a difficult thing to do. That's what I'm trying to get to. That's why we can't find the names. Yes. जब कोई आता है ना लगता है यार ये तो God sent. And I think Kings 11 should have given Shah Rukh Khan a longer run. Yes. Punjab Kings should have given. That we all agree. See, Liam Livingston को पहले दिया नहीं था. Tim David को मुंबई ने ड्रॉप कर दिया था. Look how they finished towards the end. यार इनको 10 मैच दो. पहले तो डोमेस्टिक से आया है, उसमें तो फटी हुई है. Then 1 गेम 2 गेम कंधा में हाथ रख के बोलो भैया ड्रॉप नहीं हो रहे हो. देखो वो क्या कर सकता है. ये मत बोलो कि यार ठीक है नेक्स्ट 2 गेम देखो क्या कर सकते हो. अगर ड्रॉप भी करोगे तो बोलो उसको कि 10 गेम खेल रहे हो. Let him play the 4 games he's playing in peace. What our Dada did with Virender Sehwag. Anybody. Back in the days. When I made my debut, I got some runs and I made my first class debut. People said that if you don't score in this game, you might not play the next game. I was playing against Tripura. I almost felt like I was playing Marshall.
But if somebody had told me, son, you've got a lot of runs, you're here to stay, then Right. I would have enjoyed the innings more. Maybe I would have got Exactly. batted easier, made it more look Exactly. attractive. So, क्या बोल रहा हूँ लड़के को is very important. Very important. Right. I think that's a great note to end this show. I mean, we have had some great discussions. Himachal, Saurashtra, some of the players, Anuj Raj, Joydeep Da gave us some great insight. कौशिक ने फिर गिरिनाथ रेड्डी, शेख रशीद और करण शिंदे के बारे में भी बताया. तो I think that's a great note to finish this session. And of course, we will continue to give the domestic coverage. आगे बहुत सारे अभी gap है 30 days का, तो we will evaluate all the teams who have qualified pre-quarters में, who are the players to watch out for. कौन डेंजर हो सकता है, किसने अभी तक अच्छा नहीं किया, तो वी विल कवर इट इन डेप्थ. बट थैंक यू जोयदा, थैंक यू कौशिक, एंड होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन. A lovely time. Thank you, boys. Pleasure. Thank you. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू.